वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 17 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आइए चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम कौन कौन से गैसेस को एक्सचेंज करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं O2 और CO2 के बारे में, दैट हाउ O2 एंड CO2 अंडरगो exchanging mechanism. I'll tell you how O2 and CO2 undergo exchanging mechanism. First of all, exchange of O2 and CO2. Exchange of O2 and CO2 takes place in three different sites, and this site is a first one is a blood. Second site is alveoli of lungs, and third site is tissue. Yes, so exchange of O2 and CO2 takes place in three different important sites of our body. That is, first one is the blood, second one is the alveoli of the lungs, and third one is tissue itself. तो ये तीन जगह है जहाँ पे O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करके उसे बाहर फेंक देगा। तो ये वाली कंसेप्ट समझना मतलब एकदम इजी भी नहीं है। मतलब हम क्या सोचते हैं कि बेसिकली हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, इतना ही होता है। इतना नहीं होता है, ये काफी डिटेल में कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। यस गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब समझ लीजिए, फिर हम और डिटेल में जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, first of all I am teaching you exchange of gases. Don't get confused between the exchange of gases and transport of gases. Transport of gases is little bit of similar to this one, but this is not equally similar to each. Yes, transport of gases जो concept है वो exchange of gases से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन exchange of gases और transport of gases में काफी फर्क है। तो मैं आपको transport of gases कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको exchange of gases समझाता हूँ डिटेल में। So exchange of gases is nothing but the exchange between the oxygen and carbon dioxide. We know that oxygen is very essential element, essential gas to our body, and this oxygen help to transport nutrient to each and every cells of our body by the assimilation process or by the blood transportation process, and therefore it is our very important step to conduct the oxygen inside the body. So when we are doing inhalation, we are conducting atmospheric air inside the lungs. We are conducting atmospheric oxygen from outside to the lungs, and inside the lungs when oxygen is coming, inside the lungs there are number of alveoli are there. Every alveoli has a hemoglobin attached to the carbon dioxide. So when oxygen comes to the alveoli, hemoglobin separate the carbon dioxide and bind to the oxygen, and carbon dioxide given out of our body. So this is the first site where oxygen and carbon dioxide undergo exchanging in the alveoli. Second site, as oxygen combined with hemoglobin, it goes into the RBC. Yes, it goes in. I mean to say their exchanging will take place inside the RBC only. So hemoglobin combined with oxygen, carbon dioxide separate from the hemoglobin. So this takes place inside the blood, and this blood carry the oxygen to each and every cells of our body and release the oxygen inside the our body tissue. And when hemoglobin release the oxygen into the body tissue, that time hemoglobin collect the carbon dioxide from body tissue into the blood and carry. So exchange of O2 and CO2 also taking place inside the tissue. It is also taking place inside the blood. It is also takes place inside the our lung capillaries. But remember, for your kind information, exchange between the O2 and CO2 in the blood, in the alveoli, in the body tissue, it takes place by simple diffusion process. Okay guys, आपको नीट में ये पूछा जा सकता है, exchange of O2 and CO2, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है,
exchange of elementary gases takes place in which way? So the way is a simple diffusion. तो simple diffusion technique से blood में transfusion होते हैं basically. So let's start with this. Now first of all I will tell you how the oxygen and hemoglobin exchange takes place in the blood and how it takes place in the body tissue. तो मैं आपको एक basically एक छोटे से diagram draw करके आपको मैं समझाता हूँ. Now just imagine that this is the our alveoli. I hope so आपको diagram clearly दिख रहा है नहीं. Yes. Now this is our alveoli and this is our heart. This is alveoli, this is our heart, and human heart have a 4 chambers, and these 4 chambers are right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle, and here we goes our tissues. Yes, now this is our tissues. We have to understand where oxygen and carbon dioxide are undergoing exchange. So oxygen and carbon dioxide are undergoing exchange in the alveoli, you can see here. They are undergoing exchange in tissue, you can see here. And this is why I have shown you the heart, because blood when it goes to the lungs and blood when it goes to the tissue, it has to pass through the compulsory organ, that is the heart. हमारे अंदर ब्लड को मतलब हमारे अंदर जो ब्लड है, ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स में जाना पड़ेगा और उसे ऑक्सीजन को टिश्यू की तरफ लेके जाने के लिए उन्हें हार्ट को क्रॉस करना पड़ेगा. मतलब बाय द वे यू आर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू और बाय द वे यू आर कलेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड थ्रोइंग आउटसाइड, यू आर गोइंग थ्रू टिश्यू टू द लंग्स. यू हैव टू एंटर इनटू द हार्ट. Either it is a pure blood or either it is impure blood, that doesn't make any difference, but you have to enter into the heart. अगर आपको प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से टिश्यू की तरफ लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में से लंग्स की तरफ लेके जाना है, तो कंपलसरी आपको हार्ट को क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्ट में प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन, दोनों का एक्सचेंज होता है. तो चलिए हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं. Yes, so I have shown you here, it is a alveoli of lungs. This is a heart chamber and this is our tissue. Yes, this is our tissue. और टिश्यू के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है वो इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक सेल ड्रॉ करके बताता हूँ. दिस इज सेल, दिस इज इंडिविजुअल सेल. यस, पूरे टिश्यू के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, तो उनको ड्रॉ करके बताना, मतलब उनके अंदर क्या प्रोसेस होती है वो समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि तो आपको इजी समझ जाए इसके लिए मैं टिश्यू में से एक सिंगल सेल के अंदर प्रोसेस क्या होगी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा. तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं. तो लेकिन मैं डिटेल में देखने से पहले मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके बताता हूँ, उस टेबल के थ्रू आपको काफी इजीली समझ जाएगा. देखिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं पहले. So in this table I'll tell you 6 main things, such as respiratory gases such as O2 and CO2, then atmospheric air, alveoli, then oxygenated blood, deoxygenated blood, and then tissue. Yes,
तो सबसे पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में O2 है 159, एटमॉस्फेयर में O2 की क्वांटिटी है 159 और CO2 की क्वांटिटी है 0.3। अल्वियोला के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी है 104 और CO2 की क्वांटिटी है 40। ठीक है, ये तीन एलिमेंट हुए। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है सिर्फ 40 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है 45। और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है 45। तो ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अब हम इस टेबल को कंटिन्यू करके ये स्टडी करते हैं डिटेल में। अब ये देखिए आप, सी एट द टाइम ऑफ inhalation, at the time of inhalation our lungs have a more space but pressure is very low। हमने कल भी देखा हुआ था। at the time of inhalation volume inside the lungs is a more, volume inside the lungs increases but pressure decreases। why? because we are interested टू टेकिंग एयर इनसाइड, हम एयर को अंदर लेना चाहते हैं, इसके लिए हमारे लंग्स के अंदर जगह काफी ज्यादा है, लेकिन हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसके लिए प्रेशर कम है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन वी आर इंटरेस्टिंग टू टेक ऑक्सीजन इनसाइड। मैं आपको अब रेड कलर और ब्लू कलर का इस्तेमाल करूंगा व्हेन आई विल शो यू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यू नो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सी oxygenated blood means pure blood. Pure blood is indicated by O2 plus hemoglobin. Pure blood is indicated by O2 plus hemoglobin and deoxygenated blood, or you can say impure blood. So impure blood is indicated by CO2 plus Hb। आई थिंक सो सबको पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता हो तो आप समझ लीजिए। तो अब मैं जब भी रेड कलर मार्कर यूज करूंगा तो आप समझ लीजिए मैं प्योर ब्लड इंडिकेट कर रहा हूँ। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। और जब मैं ब्लू कलर मार्कर यूज करूंगा तो उसका मतलब होगा कि मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंडिकेट कर रहा हूँ, CO2 प्लस hemoglobin। Is it clear everybody? And white color, sorry, black color I will indicate for the general writing purpose. So let's see in detail. So at the time of inhalation we are interested to take a oxygenated blood. At the time of inhalation we are interested to take a oxygenated blood. But before taking a oxygenated blood in the body, in the lungs, what is present in the lungs that we have to understand. तो लंग्स के अंदर फिलहाल अवेलेबल क्या होता है? तो लंग्स के अंदर फिलहाल अवेलेबल होता है हीमोग्लोबिन प्लस देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड फिलहाल हमारे लंग्स के कैपिलरी में अवेलेबल है। मैंने आपको ये कहा था in both the lungs we have a 750 million alveoli. In both the lungs we have a 750 million alveoli, and alveoli are always found in the bunch, and this bunch is called alveolar sac. Single alveolar sac is around 20 alveoli, containing around 20 alveoli। ये हमारा हो चुका है। मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि आपको एक alveoli के बारे में क्लियरली समझ है। तो ये हमारे सामने है एक alveoli और उस एक alveoli के अंदर फिलहाल क्या अवेलेबल है हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और हीमोग्लोबिन प्लस अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो ब्लड कौन सा है? वो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड। मींस राइट नाउ इन द alveoli वी हैव अ CO2 plus Hb and we are interested to go for the inhalation। यहाँ पे CO2 plus Hb है तो वॉल्यूम लंग्स का क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि O2 नहीं है, और O2 नहीं है तो बेसिकली प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। लेकिन जब हम इनहेलेशन करते हैं तो वो बढ़ेगा। सो एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन we are conducting oxygen inside by the inhalation process। so you can see this oxygen is यहाँ पे इंडिकेट करते हैं oxygen is coming through the
अल्वेलर सैक। तो ऑक्सीजन कैसे आता है हमें पता है, वाया नॉस्ट्रिल, वाया नेसल चेंबर, वाया फेरिंग्स, वाया you can say trachea, then bronchi, primary, secondary, tertiary bronchi, then bronchiole and then into the alveolus. So basically ऑक्सीजन हमारे अंदर अभी आ चुका है और ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया. So by the process of inhalation, oxygen has entered into the alveoli. So now there is a two type of a bond are in the alveoli. I'll tell you these bonds. There is a bond with the oxygen and hemoglobin. This is called oxyhemoglobin. And when CO2 is combined with a Hb, this is called carboxyhemoglobin. So जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन करने से पहले हमारे अंदर कौन सा बॉन्ड होता है अल्वेओलाई के अंदर? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. व्हाई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? बिकॉज़ देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन. सो एज ऑक्सीजन कम्स इनटू द अल्वेओलाई, ऑक्सीजन break the bond between hemoglobin and carbon dioxide, that is a carboxyhemoglobin compound. As the carbon dioxide get removed, oxygen directly get connected to the hemoglobin. So here oxygen plus hemoglobin, this becomes oxyhemoglobin. So oxygen ऐसे आया और अब कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न जाएगा. So there is an exchange of CO2 and O2. So first exchange of O2 and CO2 takes place in the alveoli. Now we are going to show it into the heart. तो हार्ट के अंदर कैसे शो करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए. See now blood is oxygen plus hemoglobin. So what we will say, the blood is oxygenated blood or pure blood. ये चीजें बारीक बारीक जो छोटी छोटी चीजें ना, अगर आप इनको अगर मिस कर लोगे तो आपको नीट में काफी डिफिकल्टी जाएगी. अब लंग्स के अंदर ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन है ना, मतलब ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड. तो लंग्स में देखिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे देखिए. यस, एटमॉस्फेयर अल्वेलाई. तो अल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है? अल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी है 104. और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी थी? कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी थी पहले, इट वाज हाउ मच? 40. सो इन द लंग्स, in the alveoli of lungs, carbon dioxide was a 40 and oxygen is a 104. Oxygen is a 104. Yes. Now this becomes a pure blood. So now for your kind information, I wanted to tell you there is a one vein in our body called as a pulmonary vein. हमारी बॉडी में एक आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी एक ही आर्टरी हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. बाकी सभी आर्टरी प्योर ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. और पल्मोनरी वेन एक ही वेन है हमारी बॉडी में जो प्योर ब्लड लेके जाती है, बाकी सभी वेन इम्प्योर ब्लड लेके जाती है. सो राइट नाउ आई टेल यू अबाउट द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. सो रिमेंबर देयर इज वन पल्मोनरी वेन इज देयर. मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए. देयर इज वन pulmonary vein is there. This vein is collecting the pure blood from the lungs to the heart. This vein is collecting pure blood from lungs to the heart. To the which part of heart? To the left auricle. So now left auricle have pure blood. Pure blood is indicated by red color. So now left auricle have a pure blood. Now this left auricle passing the blood to the left ventricle, pure blood, and from the left ventricle blood is going into the systemic tissue. Yes, अब आप देखिए ब्लड है ना टिश्यू की तरफ आ गया है. ब्लड टिश्यू की तरफ आ गया है और अब ब्लड में क्या है? नाउ ब्लड हैज O2 प्लस Hb. और अल्वेओलाई के अंदर क्या है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. अल्वेओलाई के अंदर फिलहाल है CO2 एंड Hb. तो कौन सा कंपाउंड है यहाँ पे? यहाँ पे है कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन. और कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन में मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 is 45%. CO2 is 45%. अब हम क्या कर रहे हैं? What we are doing?
this artery which is coming from the systemic aorta to the tissue. ये टिश्यू हमारी बॉडी में कौन से भी टिश्यू हो सकते हैं, ये मसल टिश्यू हो सकते हैं, बोन टिश्यू हो सकते हैं, ब्रेन टिश्यू हो सकते हैं, बॉडी के कौन से भी ऑर्गन के ये टिश्यू हो सकते हैं. सो नाउ ब्लड इज एंटर इनटू द टिश्यू. टिश्यू के अंदर ब्लड जब जाता है, मतलब सेल के अंदर जब ब्लड जाता है तो तब क्या होता है. सो नाउ ब्लड इज गोइंग इनटू द सेल फ्रॉम द टिश्यू के अंदर काफी सारे सेल हैं, हजारों सेल हैं, मतलब सेल टिश्यू के अंदर हजारों सेल है, लेकिन ब्लड कहां जाएगा, एग्जैक्टली सेल के साइटोप्लाज्म पे जाएगा. सो नाउ ब्लड इज एंटरिंग इनटू द टिश्यू. ब्लड इज थ्रोइंग व्हाट, Hb प्लस O2. ब्लड क्या रिलीज कर रहा है, Hb प्लस O2. और मतलब एक्चुअली ब्लड क्या एक्चुअली रिलीज करता है, टिश्यू के अंदर क्या अवेलेबल होता है, सिर्फ CO2 अवेलेबल, सिर्फ CO2 अवेलेबल होता है. हीमोग्लोबिन टिश्यू के अंदर अवेलेबल नहीं होता. यहाँ पे क्या अवेलेबल है, हीमोग्लोबिन प्लस O2. तो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सेल तक लेके आया है. फ्रॉम द सिस्टमिक एओर्टा blood is enter into the tissue, and from the tissue blood is now going to enter into the cytoplasm of each cell. This artery, or you can say arterial, or you can say smallest blood capillary, has brought hemoglobin with oxygen, and this artery or capillary, आप कुछ भी कह लो, this capillary is releasing oxygen into the cell and collecting the CO2. तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन को यहाँ पे छोड़ दिया, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो यहाँ पे देखिए 45%, मतलब 45 क्वांटिटी है. लेकिन हमें यहाँ पे टिश्यू के बारे में भी देखना है ना. तो ये एक्चुअली क्वांटिटी कहाँ पे थी, ये एक्चुअली क्वांटिटी थी ब्लड में. तो ब्लड में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है और CO2 की 45. अब हमें टिश्यू में देखना है, तो टिश्यू में ऑक्सीजन है 40, टिश्यू में ऑक्सीजन है सिर्फ 40. तो ये देखिए हीमोग्लोबिन ने O2 यहाँ पे छोड़ दिया, और अगर हीमोग्लोबिन ने O2 को छोड़ दिया है तो वो किसको बाइंड कर लेगा, CO2 को बाइंड लेगा. तो अब ये देखिए ये दोनों के दोनों CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन दोनों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल में क्या आएगा, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन. एंड नाउ फ्रॉम राइट ऑरिकल blood is going into the right ventricle, where again there is a CO2 plus Hb, and now there is blood is going into the pulmonary trunk, and from the pulmonary trunk there is a one vein is available, that is called pulmonary vein, and that vein is collecting impure blood, means deoxygenated blood, again into the lungs. और अब lungs में फिर से कंपाउंड कौन सा बन गया, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन. तो ये देखो हम ब्लड को फिर से घुमा के वापस लेके आए. यस, मैं आपको फिर से एक बार सिंपल तरीके से समझाता हूँ. ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड इसके लिए समझाया आपको, क्योंकि जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एलन हुआ, ICT हुआ, यस, सर्वोत्तम उपाध्याय, जो बड़े ICT जो कोचिंग क्लासेस हैं, तो कोचिंग क्लासेस में बेसिकली छोटी से छोटी पॉइंट ऐसे ही कवर करते हैं. ठीक है, तो मैंने भी अभी यही ठाना है कि हम छोटी से छोटी पॉइंट हम ऐसे कवर करेंगे. तो ये देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. लंग्स मींस alveoli of lungs, then blood, and then tissue. First, I am conducting oxygen inside by the inhalation. Then this oxygen enter into the alveoli. In the alveoli there was already hemoglobin plus carbon dioxide. Which compound? Carboxyhemoglobin. Right, आप सही सुना, carboxyhemoglobin. Now oxygen enter into the alveoli. Oxygen combined with hemoglobin and turn into oxyhemoglobin compound. Carbon dioxide thrown away. It is written, it is gone out. Yes, so carbon dioxide is given out, oxygen is now with hemoglobin. Now oxygen plus hemoglobin means oxygenated blood or pure blood. It will be collected by the pulmonary vein. Only the vein in our body which collect pure blood. Pulmonary vein carry the blood to the left auricle, then left ventricle. From left ventricle blood come into the systemic aorta. From the systemic aorta, blood carried by specific artery and transport to the different parts of our body, especially to the body tissue and especially inside the cytoplasm of cell. Now inside the cytoplasm of cell, already there is a carbon dioxide plus hemoglobin is available, means that is carboxyhemoglobin.
Now oxygen has put it into the tissue and carbon dioxide is collected from the tissue. So here exchange of O2 and CO2 takes place into the tissue. Now CO2 combined with hemoglobin turn into the carboxyhemoglobin. Now blood, impure blood is carried via vein. Yes, वो वेन का नाम कैसे होगा? डिपेंड ऑन द साइट. लाइक स्टमक में से ब्लड कलेक्ट करती है तो गैस्ट्रिक वेन, लिवर में से कलेक्ट करती है तो हेपेटिक वेन, किडनी में से ब्लड कलेक्ट करती है तो renal vein. So now impure blood is collected by vein and put it into the left auricle, then left ventricle, and then blood from the left ventricle go to the pulmonary trunk. From the pulmonary trunk, pulmonary artery. Only the artery in our body which carry impure blood. So pulmonary artery carry impure blood from the heart to the lungs. Now again in lungs, blood have a impure blood, deoxygenated blood, and compound is a carboxyhemoglobin. फिर हम फिर से क्या करेंगे? इनहेलेशन, ऑक्सीजन आएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर चला गया. तो ये वाली प्रोसेस हमारी बॉडी में पूरा दिन 24 घंटे 7 दिन 12 महीने जिंदगी भर चलती रहती है. तो इसे हम कहते हैं यस एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है. और ये वाले अमाउंट है, ये अमाउंट कौन सा है? ये अमाउंट है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कौन से ऑर्गन में कितनी होती है. तो ये है हमारा टॉपिक exchange of gases. Now do tell me guys, how do you like it? Come on guys, tell me. समझ में आ गया पूरा? आपको पूरा समझ में आ गया? क्लियर? ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कल हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती है, काफ़ी सारा जो कंटेंट होता है लेक्चर का वो भी बदल जाता है. Come on, tell me, clear everybody? Hello guys. Okay, so it was our topic called exchange of gases.